Okay, this is my review of the Amazon Basics Lightweight Mini Tripod. Now, here is the little tripod, and it's pretty cool. Pretty cool little device. It replaces this little piece of junk, which kind of came with the camera I'm using, which honestly isn't that great of a camera, but you know, it's one of these little tripods, but this thing is really difficult to control, but I actually got to use it, I guess, so I can make this video. Let me install this real quick. So I can actually show you this thing. See, that's what I'm saying. This thing keeps wanting to fall over all the time. Well, I hate this little tripod. You know, this my old one. Man, this thing sucks. Never buy one of these little flexible tripods. They're not very good. But this one, on the other hand, like I said, you know, is a pretty good replacement. You know, it has these extendable tubes, you know, which can go in and out. You know, the tripod opens, and it seems like a pretty decent quality little tripod there. So, you know, the camera screws right onto the bottom of it. Here, let me get you this Pixo. I can use it. As an example, so, you know, you can see here. But like I said, it folds up, you know, for easy transport. And it has a little release on it, so, you know, you can swivel and tilt the camera if you want. Let me extend these legs out, so if you do that, if you tilt your camera, you know, you don't want your center of gravity on your camera to fall off. But anyway, the point is, it's pretty versatile little stand. I mean, you know, for, you know, like $7 or so, you know, I'm pretty happy with the thing. It's a hell of a lot better than the piece of junk I got on there on this camera right now. You know, this thing really bites. I mean, these are not good little mounts. In fact, I'm probably going to go over there and kind of recommend that people don't buy these. You see, one of the knobs fell off. This actually came with my camera, which is a little Toshiba, Camilio S20, but which is, you know, a compact little camera, and it's good for basic functionality. But I don't think they make this camera anymore. But the point is that still, I needed a nice little tripod, and this is nice and compact. It's small. I mean, it'll fit in your pocket. I mean, you know, it's about that tall, so, you know, about 7.5 inches, something like that. So, and then if you contract it, you know, it's about, you know, about 4 inches or so, you know, from the black stem up. So, I mean, it's compact. You know, you could easily put it in your pocket. This is a pretty good purchase, you know, for $7 or so. So, you know, I definitely suggest give it a try. Anyway, thanks. Grip assimilation completed, master. तो ये स्टैंड मंगाया था मैंने अमेज़ोन से, और इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त क्वालिटी है। अगर आप देखेंगे तो बेस्ट क्वालिटी है। मुझे ये इंस्टा 360 पे यूज़ करना था, तो जब मुझे व्लॉगिंग करनी होती है, जब सेल्फी बनानी होती है वीडियो, तो मैं इसको इससे नीचे करके और इसको टाइट कर देता हूँ। बढ़िया सेट होता है एकदम ये। और देखिए, ऐसे पकड़ के इसको व्लॉगिंग कर सकता हूँ मैं। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टफ है। मटेरियल बहुत बढ़िया है इस स्टैंड का, इसका मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है। और जब मुझे इसको स्टैंड पे खड़ा करना होता है, जब इसको थोड़ा सा लूज़ किया, सीधा करके और इसको ऐसे टाइट कर दिया। ऐसे ये टाइट हो गया। अब इसकी लेग्स खोल दिए
ऐसे भी ये स्टैंड हो जाता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को जगह स्पेस कम लगता है इसका, तो मैं इसको लेग को खोल लेता हूँ। ये डबल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे डबल है ये, तो मैं इनको खोल के और ऐसे स्टैंड कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको ऐसे रख के आराम से व्लॉगिंग कर सकता हूँ, बैठ के अपना खुद का भी शूट कर सकता हूँ, और कोई लोकेशन मेरे को लेना है तो वहाँ का आराम से आ जाता है। स्क्रीन टूटी हुई है, इंस्टा की वीडियो में डाल रखा है मैंने व्लॉग, 3rd व्लॉग में ये टूट गई थी हमारे पास मथुरा में, वृंदावन का जब शूट कर रहे थे, इग्नोर करना। और ये ऐसे हो जाता है, बेस्ट क्वालिटी है, आप बाय कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा नीचे। थैंक यू दोस्तों। Como pueden ver, aquí está, pésima calidad, muy chafa, quita las patitas, ahí está rota, ahí tiene la del otro lado donde se tiene que agarrar, eso entra aquí, pero como ya está roto no sirve, tiene una semana que lo compré, aquí está, pueden verlo, patas rotas, agarra bien aquí, pero ya no sirve de nada sin las patas, así que muy frágil para lo que cuesta y muy corto, entonces ni modo, ya que perdí. Ici nous avons une bague de serrage, un réglage directement ici, des pieds plutôt stables qui se règlent en hauteur. Et c'est plutôt stable.